So, good morning, everybody who has joined us today for the Sunday morning reading session. We are reading 3 books in this session, one after the other. I will be reading a book by Gerald Durrell called My Family and Other Animals. And for those who have joined us new, I'd just like to tell you something about our reading session. So, we read aloud here and we try and understand what is being spoken about by the author of the book that we are reading. So, Gerald Durrell's book, My Family and Other Animals, as you can guess by the title, is a book about Gerald's adventures on a small island called Corfu Island in Greece, where he grew up along with his 2 elder brothers and an elder sister and his mother. So we've covered quite a few chapters of the book, and we see how Gerald was very, very interested in everything that grew in nature, all the flora and the fauna. And he talks about his fascination observing a lot of these creatures in its natural habitat, in its natural place of living. And he adds a lot of descriptions and makes it seem almost as if those animals are alive like human beings and living with us. There's a lot of exaggeration, which adds to the humor. And he talks about each member of his family, the tutors that he has, and the last week we read about the latest tutor that he went to, who was an expert on birds. He was an ornithologist. So we will come to know something about Gerald's experiences with this ornithologist as we read today's portion of the book. Manisha Ma'am, would you want to play the anthem now? As a good schools, we have a good schools anthem, which we normally begin our sessions with on Sundays. And the Sunday Good School is meant mainly for reading and for building all our strengths as far as our vocabulary is concerned, language is concerned, understanding is concerned. So I request Manisha Ma'am to please play the anthem. Brinda Ma'am. Yes, sir. Good morning, Sandeep. My good school, we are not good school. My good school. My good school. We are not Sunday good school, we are my good school. Yes. Thank you. We are here at my good school. Things here are so cool. Together we learn, together we create, together we meditate. Everyone is welcome. Teachers here are awesome. We learn good values, we learn many skills. We soar above the hills. Let's shout it out, hey, let's all be proud, hey, hats off to my good school. Just what we need, hey, for us to succeed, hey, are all here in my good school. So this was our My Good School's anthem. So during our assembly in the school, we all learn new songs or some prayer songs. We do recite about it. So in Sunday school, we just recite this our anthem. And as you all can see that I have typed Joy of Learning Diaries. So this is the page, our website page, where we do also, where the children write and we publish their reflections. So this is last week's reflections, which we are going to read after Brinda Ma'am's reading. So whenever we are done with the book reading, in the end, children do write their understanding, their takeaways from the Sunday school, and they send it to us. Likewise, we publish them.
So I'll be sharing the book which ma'am is reading. Is my screen visible, ma'am? Yes, Manisha, thank you so much for that. Brinda ma'am, can Krishna you give me Kumar, 30 seconds? yes, please. Yeah, I Also, thought there last is, week was interesting travels. We met last Sunday, if you remember. yes, we did. Three things I want to share with everyone. First, I had the honor and privilege of visiting DPS Gurugram, Sector 45 on 11th. It was the investiture ceremony of Shiksha Kendra. So the interesting thing is DPS Gurugram at 1:30 p.m. every day becomes Shiksha Kendra. And Shiksha Kendra is open to any and everyone without any limitation of resource whatsoever. And the beautiful part is Shiksha Kendra runs from 1:30 to 5:30. And the children do the NIOS exam. The second thing, the graduates from the school have been offered internships by us as our special project. So we are building an internship program right inside the school where we can work with interns on the ground and develop a field force. So Kunal will shortly visit the Shiksha Kendra in Gurugram and sign up and work with interns and train them. Second thing. Third, post we met last Sunday, we had a very interesting meeting with my publisher, Rupa Publications, who published our first book called My Good School, Where Passion Meets Education. It's a great honor for me to let you know that we met with the Snelata Prize winners, Brinda Ghosh Ma'am, give her a hand, and Swati Ma'am. They were accompanied by Subhashish Ghosh Sir. So at the meeting, we proposed we start publishing your work, what the teachers write and what Manisha Ma'am has just shown you in the Joy of Learning Diaries. So we are going to publish a series of anthologies from the Joy of Learning Diaries as well as from the Happy Teachers Academy. And the first of the series is the courage to teach. Thank you, Jugjiv Sir, for the courage to teach. Thank you, Manisha, for the courage to teach. And we admire you, Brinda, for the courage to teach. That's all I want to say. Sorry I took a minute. Not an issue at all. It was a pleasure to have you sharing all this news with us. I have seen two hands being raised, ma'am, Ashwika and Krishna Kumar. So somebody is saying, I can't understand. And Ashwika has raised her hand too. So may I request these children who have raised their hands to please wait till the end of the session, and we shall solve your doubts. Is that okay? Please speak Hindi. I can't understand. That is what is coming in the chat box. All right. I just want to say something here. This session for us is a session of reading in English. You will have shortly another session where there is a book being read in Hindi. All right. So ये किताब जो है ये अंग्रेजी में लिखी है, हम इसे अंग्रेजी में ही पढ़ेंगे. And as I go along, if you can understand, I'm sure if you make a little bit of an effort, you will be able to understand and follow. Brinda ma'am, lot of people are saying, "Meri आवाज सुनो." मेरी आवाज सुनो. We want to tell them ये मेरी आवाज सुनने की जगह नहीं है, ये वेबिनार है. यहाँ आप पढ़ो, हम आवाज सुनना नहीं चाहते, हम आपको आवाज सुनाना चाहते हैं. आप स्क्रीन पे देखो, आवाज सुनो और पढ़ने की कोशिश करो. जब रिफ्लेक्शन का टाइम आएगा, आप हाथ ऊपर करेंगे, आपको मनीषा मैम अनम्यूट कर देंगी, तब आप बोल सकते हैं. इट्स लाइक अ क्लासरूम. सॉरी फॉर दैट. अभी अपने हाथ नीचे करो, ये बोलने का समय नहीं है. आस्विका, अंतिमा, please put your hands down. It's your first session today. That is why we are telling you how things work. Things work very simply. We read 3 books. आपको किसी ने ये इंट्रोडक्शन नहीं दी. हम एक लॉन्ग फॉर्म इंग्लिश बुक पढ़ते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म इंग्लिश बुक और एक हिंदी में किताब पढ़ते हैं. और फाइनली जब हम रिफ्लेक्शंस पढ़ते हैं, तब हम हिंदी और अंग्रेजी में बात करते हैं. घबराइए मत. आप चाहेंगे हम हिंदी में बोलेंगे, परंतु याद रखिए, अगर आपको दुनिया में रहना है, कल के लिए तैयार होना है, तो अंग्रेजी आनी चाहिए. आपको मेहनत करनी पड़ेगी. हम आपके साथ हैं, इसलिए अपने हाथ थकाओ मत. वृंदा मैम का हाथ थामो,
मनीषा मैम का हाथ पकड़ो और जुगजीव जी के दिल पे हाथ रखो और आगे चलो. Thank you. Thank you, Sandeep Sir, for that. And I am going to start with today's reading. So we were reading about Kralewski, who was Gerald Durrell's newest tutor. And he was an ornithologist. An ornithologist is a person who studies birds and their habits. So here we have Gerald visiting Kralewski. And if you remember what we read last week, we saw how this gentleman had a whole room full of cages with some very, very unique birds in them. So that is where the conversation is. I'll take it from the beginning of the page. Rock thrush, announced Kralewski, poking his head round the door suddenly and pointing at this beautiful bird. I had it sent over as a nestling last year from Albania, you know. Unfortunately, I have not as yet been able to obtain a lady for him. He waved the watering can amiably at the thrush and disappeared inside again. The thrush regarded me with a roguish eye, fluffed his breast out, and gave a series of little clucks that sounded like an amused chuckle. Having gazed long and greedily at him, I went into the attic where I found Kralewski still filling water pots. I wonder if you would care to assist, he asked, staring at me with vacant eyes, the can drooping in his hand so that a fine stream of water dribbled onto the highly polished toe of one shoe. A task like this is so much easier if two pairs of hands work at it, I always think. Now, if you hold the watering can, so I will hold out the pots to be filled. Excellent. That's the ticket. We shall accomplish this in no time at all. So, while I filled the little earthenware pots with water, Kralewski took them carefully between finger and thumb and inserted them deftly through the cage doors, as though he were popping sweets into a child's mouth. As he worked, he talked to both me and the birds with complete impartiality. But as he did not vary his tone at all, I was sometimes at a loss to know whether the remark was addressed to me or to some occupant of the cages. Yes, they are in fine fettle today. It's the sunshine, you know. As soon as it gets to this side of the house, they start to sing, don't you? You must lay more next time. Only two, my dear, only two. You couldn't call that a clutch with all the goodwill in the world. Do you like this new seed? Do you keep any yourself, eh? There are a number of most interesting seed eaters found here. Don't do that in your clean water. Breeding some of them is, of course, a task, but a great rewarding one. I find especially the crosses. I have generally had great success with crosses, except when you only lay two, of course. Rascal, rascal. Eventually, the watering was done, and Kralewski stood surveying his birds for a moment or so, smiling to himself and wiping his hands carefully on a small towel. Then he led me round the room, pausing before each cage to give me an account of the bird's history, its ancestors, and what he hoped to do with it. We were examining, in a satisfied silence, a fat, flushed bullfinch, when suddenly a loud, tremulous ringing sound rose above the clamor of bird song. To my astonishment, the noise appeared to emanate from somewhere inside Kralewski's stomach. By Jove, he exclaimed in horror, turning agonized eyes on me. By Jove!
He inserted finger and thumb into his waistcoat and drew out his watch. He depressed a tiny lever and the ringing sound ceased. I was a little disappointed that the noise would have such a commonplace source. To have a tutor whose inside chimed at intervals would, I felt, have added greatly to the charm of the lessons. Kralewski peered eagerly at the watch and then screwed up his face in disgust. By Jove, he repeated faintly. 12 o'clock already? Winged time indeed. Dear me. And you leave at 1/2 past, don't you? He slipped the watch back into his pocket and smoothed his bald patch. Well, he said at last, we cannot, I feel, achieve any scholastic advancement in half an hour. Therefore, if it would pass the time pleasantly for you, I suggest we go into the garden below and pick some groundsel for the birds. It's so good for them, especially when they're laying. So we went into the garden and picked groundsel until Spyro's car honked its way down the street like a wounded duck. Your car, I believe, observed Kralewski politely. We have certainly managed to gather a good supply of green stuff in the time. Your assistance was invaluable. Now, tomorrow you will be here at 9 o'clock sharp, won't you? That's the ticket. We may consider this morning was not wasted. It was a form of introduction, a measuring up of each other. And I hope a chord of friendship has been struck. By Jove, yes, that's very important. Well, au revoir. Until tomorrow then. So here we have Gerald's new tutor, spent a few hours with Jerry, and he has introduced him to his routine of giving water and talking to the birds. And then suddenly he realizes that it is almost time for Gerald to go back home. So he's a little upset that time went by so quickly. But he tells him, let us consider that this particular moment was a moment to establish a friendship between us and then carry on. And so he bids bye to Gerald, and Gerald moves on with Spyro in his car. As I closed the creaking wrought iron gates, he waved at me courteously and then wandered back towards the house, leaving Manisha Ma'am, please turn the page. Leaving a trail of golden flowered groundsel behind him, his humpback bobbing among the rose bushes. When I got home, the family asked me how I liked my new tutor. Without going into details, I said that I found him very nice and that I was sure we should become firm friends. To the query as to what we had studied during our first morning, I replied with a certain amount of honesty that the morning had been devoted to ornithology and botany. The family seemed satisfied. But I very soon, found that Mr. Kralewski was a stickler for work, and he had made up his mind to educate me in spite of any ideas I might have on the subject. The lessons were boring to a degree, for he employed a method of teaching that must have been in fashion around about the middle of the 18th century. History was served in great indigestible chunks, and the dates were learnt by heart. We would sit and repeat them in a monotonous sing-song chorus until they became like some incantation that we chanted automatically, our minds busy with other things. For geography, I was confined to my annoyance to the British Isles,
and innumerable maps had to be traced and filled in with the bevies of counties and the county towns. Then the counties and the towns had to be learnt by heart, together with the names of the important rivers, the main produce of places, the populations, and much other dreary and completely useless information. Somerset, he would trill, pointing at me accusingly. I would frown in a desperate attempt to remember something about that county. Kralewski's eyes would grow large with anxiety as he watched my mental struggle. Well, he would say at length, when it became obvious that my knowledge of Somerset was non existent. Well, let us leave Somerset and try Warwickshire. Now then, Warwickshire, county town, Warwick, that's the ticket. Now, what do they produce in Warwick, eh? As far as I was concerned, they did not produce anything in Warwick, but I would hazard a wild guess at coal. I had discovered that if one went on naming a product relentlessly, regardless of the county or town under discussion, sooner or later you would find the answer to be correct. Kralewski's anguish at my mistakes was very real. The day I informed him that Essex produced stainless steel, there were tears in his eyes. But these long periods of depression were more than made up for by his extreme pleasure and delight when, by some strange chance, I answered a question correctly. Once a week, we tortured ourselves by devoting a morning to French. Kralewski spoke French beautifully, and to hear me massacring the language was almost more than he could bear. He very soon found that it was quite useless to try to teach me from the normal textbooks. So these were set aside in favor of a 3-volume set of bird books. But even with these, it was uphill going. Occasionally, when we were reading the description of the robin's plumage for the 20th time, a look of grim determination would settle on Kralewski's face. He would slam the book shut, rush out into the hall to reappear a minute later wearing a jaunty Panama. Panama is a hat. I think it would freshen us up a little. Blow the cobwebs away if we went for a short walk, he would announce, giving a distasteful glance at Les Petits Ossets de la Europe. I think we will make our way through the town and come back along the esplanade, eh? Excellent. Now we must not waste time, must we? It will be a good opportunity for us to practice our conversational French, won't it? So no English, please. Everything to be said in French. It is in this way that we become familiar with a language. So those of you over here who think that it's going to be difficult for you to follow English, just take a cue from here. When you start talking in the language that you want to learn, it does not matter whether you make mistakes, but if you persist and if you keep practicing, you tend to learn the language, and you should practice it with somebody who knows the language well. But the more you speak, the more you listen, the better your language learning will be. Yes, Sandeep Sir. Ma'am, just a word of housekeeping and decorum. I've had some people use some bad words. I've thrown them out. One. Second, people who are new are wondering why they are here, which means they have got the link without instruction. So instruction is very simple. What ma'am just said, you are here to listen. That's it. Nothing more than that. You are here to learn new words. Nothing more than that. And we don't expect anything out of you. Instead of typing in the chat box, which I have now disabled,
It's better you listen. You are here for thinking deeply. You are here for concentrating, not for fidgeting. So I just thought I'd come in and explain this to you, why you are here. You are simply here to read and do nothing else. Just forget everything else. Watch the screen. Watch the words slowly as ma'am reads. She's reading with every breath, and that is a beautiful part. So what she said about reading, when you hear the language, you learn. When a child is born, the child has no vocabulary. A child doesn't go to school, but when a child grows up home, the child picks up vocabulary. So please be the child, listen and read with us. Thank you, Brinda Ma'am. Thank you, sir. Manisha Ma'am, please go back a page. I hadn't read that whole page. Thank you. So Sandeep Sir put it beautifully that when a child is born, he does not come knowing a language. He picks it up from the atmosphere. I also want to tell you another interesting fact here, that the learning of language, the listening of language starts even before the baby is born. It starts in the womb of the mother. So we all know the story from the Mahabharata, where we had this character, Abhimanyu, who came out having heard the strategy of war being constantly discussed in around him. And when he was born, he already knew about it. So here we are with this ability in human beings where the listening, the ears become active first. That's the first sense that really becomes active. And that's how the language develops. So the more you hear and the more you speak, and then the more you read, the better your language is going to be. And that's why we are doing these reading sessions for you. So let me just carry on for a little while. So in almost complete silence, we would wend our way through the town. The beauty of these walks was that no matter which direction we set out in, we invariably found ourselves somehow or other in the bird market. We were rather like Alice in the Looking Glass garden. No matter how determinedly we strode off in the opposite direction, in no time at all we found ourselves in the little square where the stalls were piled high with wicker cages and the air rang with the song of birds. Here, French would be forgotten. It would fade away into the limbo to join algebra, geometry, history dates, country towns, and similar subjects. Our eyes sparkling, our faces flushed, we would move from stall to stall, examining the birds carefully and bargaining fiercely with the vendors, and gradually our arms would become laden with cages. So there's a reference here to Alice and her garden. I hope that a lot of the participants here have read Alice in Wonderland. If you haven't, whatever age you are at, please pick up a copy of Alice in Wonderland and do read it. Alice in Wonderland is not only meant for little children. Alice in Wonderland has something for everybody, whatever the age. And you will enjoy reading Alice in Wonderland even if you are a teenager. Read it patiently and you will see the world of wonder and such a lot of lessons there to learn for leading our lives, right? So do pick up Alice in Wonderland if you haven't read it. Jugjiv Sir, do you think I have time to read a little more or should I stop because it is 11? No, go ahead, no problem. Right, okay. Then we would be brought suddenly back to earth by the watch in Kralewski's waistcoat pocket, chiming daintily, and he would almost drop his tottering burden of cages in his efforts to extract the watch and stop it. By Jove, 12 o'clock. Who would have thought it, eh? Just hold this linnet for me, will you? While I stop the watch. Thank you. We will have to be quick, eh? I doubt whether we can make it on foot, laden as we are. Dear me, I think we had better have a cab. An extravagance, of course.
but needs must where the devil drives, eh? So we would hurry across the square, pile our twittering, fluttering purchases into a cab, and be driven back to Kralewski's house, the jingle of the harness and the thud of hooves mingling pleasantly with the cries of our bird cargo. I had worked for some weeks with Kralewski before I discovered that he did not live alone. At intervals during the morning, he would pause suddenly in the middle of a sum or a recitation of county towns and cock his head on one side as if listening. "Excuse me a moment," he would say. "I must go and see mother." At first, this rather puzzled me, for I was convinced that Kralewski was far too old to have a mother still living. After considerable thought, I came to the conclusion that this was merely his polite way of saying that he wished to retire to the lavatory, for I realized that not everyone shared my family's lack of embarrassment when discussing this topic. It never occurred to me that if this was so, Kralewski closeted himself more often than any other human being I had met. One morning, I had consumed for breakfast a large quantity of low-carts, and they had distressing effects on me when we were in the middle of a history lesson. Since Kralewski was so finicky about the subject of lavatories, I decided that I would have to phrase my request politely, so I thought it best to adopt his own curious term. I looked him firmly in the eye and said I would like to pay a visit to his mother. "My mother?" he repeated in astonishment. "Visit my mother now?" I could not see what the fuss was about, so I merely nodded. "Well," he said doubtfully, "I'm sure she'll be delighted to see you, of course, but I'd better go and see if it is convenient." He left the room, still looking a trifle puzzled, and returned after a few minutes. "Mother would be delighted to see you," he announced, "but she says, will you excuse her being a little untidy?" I thought it was carrying politeness to an extreme to talk about the lavatory as if it were a human being. But since Kralewski was obviously a bit eccentric on the subject, I felt I had better humor him. I said I did not mind a bit if his mother was in a mess, as ours frequently was as well. "Ah, yes, yes, I expect so," he murmured, giving me rather a startled glance. He led me down the corridor, opened a door, and to my complete surprise, ushered me into a large, shadowy bedroom. The room was a forest of flowers. Vases, bowls, and pots were perched everywhere, and each contained a mass of beautiful blooms that shone in the gloom like walls of jewels in a green shadowed cave. At one end of the room was an enormous bed, and in it, propped up on a heap of pillows, lay a tiny figure not much bigger than a child. She must have been very old, I decided as we drew nearer, for her fine, delicate features were covered with a network of wrinkles that grooved a skin as soft and velvety looking as a baby mushroom's. But the astonishing thing about her was her hair. It fell over her shoulders in a thick cascade and then spread halfway down the bed. It was the richest and most beautiful auburn color imaginable, glinting and shining as though on fire, making me think of autumn leaves and the brilliant winter coat of a fox. All right, I shall stop here for now, and the rest of the encounter of Gerald with Kralewski's mother we shall read next week. Thank you, sir. If there is any thought on what we have read so far, maybe we could ask them to just mention it. Yeah, now Sandeep's, I think, disabled the chat, but the Q&A works. Yes. Yeah, Worry I think it's simple. Let's have nevertheless. lower hands and raise hands. That's very simple. So if Yes. someone raises hand,
ma'am will say, please talk. Yeah. We, You know, in the Next one. chat and QA, I've disabled simply because of some bad comments and thoughts, which I thought were Absolutely. not present. So I think the simple way, now that we have grown a webinar and we have people from all walks of life, they have to raise hands, and it will be the liberty of the teacher to accept the hand or not. Okay, we have Jigar who has raised his hand. Jigar, do you have a question related to what we read? Yeah, Brinda, just another update. There are Yes, people asking कौन सी किताब निकालूं? अब right. मैं Yeah. इसका जवाब देता हूं, आपको कोई किताब निकालनी नहीं है, किताब आपकी स्क्रीन पे है, आपको केवल ध्यान देना है। माय गुड स्कूल का मतलब है कि आप ध्यान लगाएं और कुछ नहीं, आपको कुछ निकालना नहीं है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ शांत तरीके से स्क्रीन के आगे बैठना है। स्क्रीन पे किताब आती है, जो किताब पढ़ी जा रही है, वृंदा मैम पढ़ रही हैं, उसका नाम है माय फैमिली एंड अदर एनिमल्स। उसका ऑथर है जेरल्ड डरल। सेशन के बाद आप इसको ढूंढना, माय फैमिली एंड अदर एनिमल्स का हिंदी रूपांतर भी है। अगर आपको किताब पसंद है, आप मंगा सकते हैं। हम कभी आपके ऊपर किताब खरीदने का बर्डन नहीं डालते, आपको मजबूर नहीं करते, इसलिए हम किताब शेयर करते हैं। टीचर अपनी किताब शेयर करती है स्क्रीन पे, जिसको आप पढ़ सकते हैं। आपको अलग से ना किताब देखनी है, ना डायरी खोल के बैठना है क्लास में, ना नोट्स लेना है, केवल रीडिंग करनी है और कुछ नहीं करना। और रीडिंग करने के बाद जब वार्तालाप होगा या बातचीत होगी, तब आप बोल सकते हैं और पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ समझ ना आया हो। मुझे उम्मीद है ये संदेश सबके पास पहुंच गया है, और मैं इस आजादी के पूर्व इस दिन आप लोगों को ये आश्वासन दिलाता एक लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव हो, और वो तभी होगी जब आप रीडिंग करेंगे। और रीडिंग करने के बाद मनीषा मैम बताएंगी, रिफ्लेक्शन करेंगे, और आपकी रीडिंग और रिफ्लेक्शन हम पब्लिश करेंगे एक डायरी में, जॉय ऑफ लर्निंग डायरी। इसलिए प्लीज हमें नोट्स मत भेजिए। जैसे मैम ने बताया कि हम कोरफू आइलैंड की कहानी पढ़ रहे हैं, जिसमें अलग अलग किरदार हैं, अलग अलग जानवर हैं, उनकी उनकी व्यावरण है, उनका व्याकरण है। आप ये सब सुनिए, और जब आप ये सब सोचते हैं, अगर आपको ऐसा जिंदगी में कुछ महसूस होता है, नजर आता है, और आपका कोई सुझाव हो, वो अवश्य लिखिए। भेजने का तरीका मनीषा मैम बताएंगी। थैंक यू मनीषा मैम, थैंक यू जुगजीव सर। आई एम जस्ट मेकिंग एन एफर्ट टू help all the new people, because today you have loads and loads of new people. नहीं, सही है, संदीप सर। सही है। और एक हमारे पास नई ऑथर भी आई हैं, गीतांजलि मैम हमारे साथ हैं। ओह, दैट्स नाइस। तो मनीषा मैम, अगर आप ढूंढ पाए तो उनको थोड़ा अनम्यूट कर दें। So thank you for Sir, coming. can you please let me know the full name? Shalini? Gitanjali. You can Pardon? make the panelists, Manisha. If you have any challenge, I'll do that for you. It's very simple. Go in the participants. नहीं sir, that I will do. I was just wondering about the name. मुझे ठीक से सुनाई नहीं पड़ा। गीतांजलि। Gosain. Got it. I'm doing it. Don't worry. Okay. Done. So now panelist. Gitanjali, you're a panelist. So Sandeep, if we can just reactivate the chat, let's just try it again, because I just find it takes away from some of the people who want to respond and having difficulty talking and some. So let's just try it again, please. So please chat का सही इस्तेमाल कीजिए, आपस में बात करने के लिए मत यूज कीजिए प्लीज। अगर आप जो हम सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब देने के लिए इस्तेमाल कीजिए प्लीज, या आपके पास कोई सवाल हो जो किताब पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड, उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी। सो अब हम ये मनीषा मैम, एक रिफ्लेक्शन आई थी PYDS से, वो मैं पढ़ना चाहता था, बिकॉज इट सॉर्ट ऑफ हेल्प समराइज
हम जो कहानी अभी पिछली बारी शुरू की थी उसके बारे में समरी उसमें आ जाती है, तो आई want you to just put that reflection on, please. PYDS, I think it's Akriti, I think it was. So we This key have reflection. Gitanjali on the screen. We can see her now. Welcome, Gitanjali, to the My Good School session on Sunday. Thank you so much. It's an honor. Really love the effort here. So, हम ये किताब पढ़ रहे हैं What You're Looking For Is in the Library. It is by Michiko Aoyama, who is a Japanese author. It's originally written in Japanese and published in 22 and been translated into English. इसमें 5 कहानियां, 5 चैप्टर है, 5 कहानियां हैं. 5वें चैप्टर हमने पिछली बारी शुरू किया था. ये एक व्यक्ति के बारे में है, उनका नाम है मसाओ. और मसाओ 65 के हुए हैं, अभी रिटायर किया है उन्होंने अपनी कंपनी से. और वो उनको पता नहीं चल रहा रिटायर होने के बाद कि वो क्या करें. And this one, Manisha, reflection, this one, which you can see. This one, yeah. If we just make it bigger and then we can get somebody to come and read it, that'll be great. So, उनको पता नहीं वो क्या करें, क्योंकि 42 साल के बाद काम करने के बाद वो रिटायर हुए हैं और उनको ये समझ में आया है कि उनकी कोई हॉबी नहीं है. दूसरा कि वो इतने बूढ़े भी नहीं है, 65 साल के हैं बट इतने बूढ़े नहीं हुए. और तीसरी बात उनके जहन में आई कि जो उनकी पोजीशन थी सोसाइटी में वो उनके काम से डिफाइंड थी, उनकी इंडिविजुअलिटी से डिफाइंड नहीं थी, पर उनके काम से डिफाइंड थी. और उनका काम चला गया तो उनको लगता है कि सोसाइटी उनके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देती. उनके पास गिफ्ट्स आते थे, बंद हो गए, कार्ड कूड आते थे, फोन आते, सब बंद हो गए लोगों के. और तो उनको इसके बारे में काफ़ी बुरा लग रहा है. तो उनकी वाइफ योरिको ने उनको कहा कि आप ये कम्युनिटी सेंटर में एक सेशन हो रहे हैं, एक बोर्ड गेम सीखने के लिए. गो दुनिया की तकरीबन सबसे पुरानी वर्ड गेम है. जैसे इंडिया की चेस है, गो उससे भी पुरानी है. तो गो गेम सीखने के सेशन हो रहे हैं, तो आप वो अटेंड कीजिए. तो वो जाते हैं वहाँ पे. और पिछली बारी हमने पढ़ा था, फिर उनको समझ नहीं आती तो देखते हैं, लाइब्रेरी भी है वहाँ पे, लाइब्रेरी में जाते हैं और असिस्टेंट लाइब्रेरियन से पूछते हैं कि कौन सी किताब लूँ मैं समझने के लिए. और फिर वो बोलती है कि आप लाइब्रेरियन से मिलिए. तो यहाँ पे हमने रुके थे पिछली बार, पर ये रिफ्लेक्शन है. मायरा, वुड यू लाइक टू रीड दिस प्लीज? Sure. Reflection. Topic. What you are looking for is in the library by Jugjiv Sir. Summary. This is a story about an old man, Masao, who retired at 65. He didn't truly know himself beyond his job. This taught me that in today's world, we are always doing but rarely being with ourselves. Masao's journey shows that self-discovery is important at every stage of life. Uh, true pros- True success is not just achievements, but uh, aware, but self-awareness. When we understand our strengths and weaknesses, we can grow, improve, and unlock our sealed potential. Instead of wasting time, we should use it to find our strengths and work on our weaknesses. The story reminded me that real growth comes from self awareness, and often the answers we seek are found within us, and that sometimes in quiet places like a library. Name Aditi Rawat. Thank you. So, ये हमने that's it, Manisha. Thanks. Let's get to the book. So, ये मैं पढ़ाना चाहता था क्योंकि ये बहुत उन्होंने अहम बात पकड़ी सेल्फ अवेयरनेस के बारे में. मैंने पहले भी कहा हुआ है, सेल्फ अवेयरनेस एक सुपर पावर है. अगर आप समझ रहे हैं आपके अंदर क्या हो रहा है, तो आप अपने आप को रेगुलेट कर पाएंगे, फिर आप समझ पाए, दूसरों को बेहतर समझ पाएंगे, आपके रिलेशनशिप बेहतर होंगे, आप सही डिसीजंस ले पाएंगे.
तो ये एक सुपर पावर है, सेल्फ अवेयरनेस। तो आगे अब पढ़ते हैं। Making my way back to the room, I saw a sign hanging from the ceiling that says reference. The screen partitioning of this area also functions as a bulletin board. However, when I make my way to the other side, my feet stop dead at the sight of a very large woman. A white button-up shirt is so tight, the buttons look in danger of popping off. And her extremely pale skin reminds me of a white glutinous rice cake in a shrine at New Year. तो ये जो मैडम के बारे में बात कर रहे हैं, ये लाइब्रेरियन है। आप कुछ पूछ रहे हैं कौन सा सब्जेक्ट है? कोई सब्जेक्ट नहीं है, जो संदीप ने भी बताया, हम कहानियां पढ़ रहे हैं। आपका काम है सुनना, उसके बारे में सोचना, और कुछ काम नहीं है, और लिखना उसके बारे में, और कोई काम नहीं है। आप सुनो, टेंशन मत लो। फिलैंथ्रोपिस्ट होता है जो दूसरों की मदद करता है, मोस्टली मेनी टाइम ओनली रिलेटेड टू मनी। और जैसे बिल गेट्स हैं, आजिम प्रेम जी हैं हमारे इंडिया में, उस तरह के काम वो करते हैं जो लोगों की मदद करते हैं और बहुत सारे पैसे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जिक्र आया ग्लूटेनस राइस। ये ग्लूटेनस मतलब स्टिकी, और श्राइन इन न्यू ईयर। ये कहानी टोक्यो में है, और टोक्यो जापान में है। तो आप, कैन एनीबडी टेल मी, कोई बता सकता है जापान में रिलीजन क्या होती है? मजहब क्या है जापानियों का? What is the religion? What is the biggest religion in Japan? Can anybody tell me? Is it Buddhism? So Buddhism is big, and their ancient belief system is based on a religion called Shinto. Okay, Shintoism. And the interesting thing in Japan is that you can be both. So in surveys done in Japan, as many people say they are Buddhist as they say they are Shintoism, right? And Shintoism, has some very basic beliefs. Some of them are around nature, and that God is everywhere. And then it's about community, it's about purity, and so they're not. They're not that different in many ways from many of the other religions that some form or the other talk about, and even Buddhism talks about. So that's why, people over there end up following both faiths. But religion isn't something that necessarily people, observe very, in a great way in their daily life, but it's around community. I think community is very big in Japan. So it's a lot about community and doing things together. So they have this ceremony, New Year, where rice is offered at the shrine. So that's what is being referred to. A white floral hairpin pierces the small bun of hair perched on the very top of her head. And we read last time, Hiroya's story, that this hairpin was actually given to her by her husband. When he proposed to her, instead of a ring, he gave her this hairpin. She is busy doing something with her hands, which continue to move without stopping, while she keeps looking down. So I don't think she can be aware of me. When I look closer, I see she is poking a needle into something resembling a lump of fur. I sense anger in her expression, and she seems unapproachable. I don't really need to go to the trouble of asking somebody for advice. I can find a book myself, I decide. Then, at that moment, a familiar shade of orange catches my eye. The lid of the box that is face down near the librarian's hand has a hexagonal border design based on a beehive, with white acacia flowers in the center. I would know that design anywhere. It's a honey dome cookie box.
from Kurimeado, the company where I worked for so many years. I notice it contains needles and scissors, though not cookies. She must be using the empty boxes for sewing tools. I lean further forward for a better look. Abruptly, the librarian looks up. "What are you looking for?" she says in a calm, dignified voice. I feel abruptly is उसका opposite हो गया smoothly, right? So abruptly means एकदम से, right? मतलब झटके से. Abruptly, the librarian looks up. "What are you looking for?" she says in a calm, dignified voice. I feel it resonating deep inside me. Resonating का मतलब हुआ अंदर से आपको मतलब अंदर से आपको उसके कोई उसके फीलिंग आ रही है उसके बारे में. What am I looking for? What am I looking for? A new way to live from now on, perhaps? The librarian stares at me. Now that my eyes meet hers, I understand that expression I had taken for anger at first is not that at all. Rather, it is more like the profound compassion of a goddess of mercy. तो हमारे भारत में बहुत देवी देवताएं हैं, देवता देवी बहुत हैं. तो कोई मर्सी की गॉडेस है? कोई कह सकता है मर्सी? मर्सी का क्या मतलब हुआ? मर्सी का मतलब हुआ जैसे आपने किसी को सहानुभूति से देखा, आपने माफ कर दिया. तो कॉन्टेक्स्ट से बहुत डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे. पर हमारे यहाँ कोई गॉडेस ऑफ मर्सी है? Goddess of mercy, anybody? Do we have a goddess of mercy in India? Okay, so in Eastern Eastern culture, like China, Japan, they have a goddess of mercy. So that's what he's referring to. Okay. I would like a book about Go. I tried it for the first time today, and it soon started to become quite complicated. The name tag on the librarian's chest reads Sayuri Komachi. Anji, mercy ka say hai daya. Correct, that's the right Hindi word for it. Miss Komachi lets her head roll to one side with a crack, then puts the needle and lump of fur away in a box and closes the lid. जैसे गोला है, lump हो गया एक गोला सा. There is a lot more to go than meets the eye, she replies. It's just not about taking opponents' territory. Each game has its own drama that forces you to think about life and death. Oh, is it that serious? It doesn't sound at all like entertainment. I thought hobbies were supposed to be amusing and fun. In that case, I'm not sure it's the right kind of thing for me, I say, scratching my head. Do you like these? I ask, pointing at the box to change the subject. Miss Komachi grunts and swivels her gaze, which now rests on the box. They are Grimeado honey dome cookies. I used to work there, actually up until last year. प्रतिमा देवी, आपको रहने की जरूरत नहीं है, आप लॉग आउट पे जा सकती हैं. आपको मतलब नहीं सुनना, आप मत सुनिए, no problem. Miss Komachi's eyes snap wide open and she sucks in her breath with a whoosh. Whoosh का मतलब हुआ, which is it's like a passing of air, you can say. It's like a sound, passing of air. Okay. And swoosh is also like whoosh, and a very big brand has swoosh as its brand. Anybody? Nike. Let me not.
trouble you on that. So Nike has a swoosh which is there. You could say it's their trademark. It's there on all of their shoes, right? Do you know that the Nike trademark, that brand, that swoosh sign that's there on their products, was actually designed by somebody in college, I forget the university, for $35. Right? And it's like Nike became a huge brand after that, and that was in 71. And in in 83, the founder of Nike gave that person 500 shares of Nike, just like that. Today, that value of those shares is, I think, $2-3 million. But originally, he got just $35 for designing that swoosh for Nike. With a smile, she begins singing out loud, as if possessed, her unfocused eyes staring into the distance. How? How is it? How are you? How am I? How is it? How is your honey dome? Kurimeado honey dome. She's singing the jingle from the honey dome commercial, a song that has not changed in the last 30 years. Miss Kamachi's voice is a falsetto, so thin it is hard to believe that it comes from the large frame. So falsetto, अगर आप सायरन पुलिस के सायरन का इमेजिन कर सकते हो, तो जो हाईएस्ट जो बहुत सबसे श्रिल सबसे पतली आवाज जो होती है उसको falsetto कहते हैं. She sings quietly enough for it not to travel beyond the partition, but on the last syllable of honey dome, at the very end, she allows herself to belt out an extended doom with a joyful, childlike expression. This comes out of nowhere, taking me utterly by surprise. I experience a warm flush of happiness, so intense it makes me feel like crying. When the song is over, Miss Kamachi resumes her normal straight face again. There's an English verse too, isn't there? Yes, that's right. But I no longer work in the earlier. The last verse of the jingle is in English. A nod to the wish for those cookies to be enjoyed by people of all ages and nationalities. Miss Kamachi bows her head respectfully to me. Thank you for these wonderful cookies. So actually, ये जो cookies हैं, this is actually not real. It's just made up by the author. I can't change the topic. Sorry, I'm reading the book. So if you're not interested, you can leave. There's no problem. प्रतिमा देवी आप अभी भी हैं. आप मतलब फायदा नहीं है. अगर आपको आपस में बात करनी है तो अलग से बात कर लीजिए. यहाँ पे मत कीजिए. संदीप सर से कह के मैंने ये चैट फिर से ओपन कराई थी, पर अगर आप इसका इस्तेमाल सही नहीं करेंगे तो या आपको निकाल दिया जाएगा या चैट फिर से बंद हो जाएगी. वो सही नहीं होगा और बच्चों के लिए जो एक्चुअल सवाल पूछना चाहते हैं. I smile dryly. It's not as though I've made them myself. That's the nub of it. Nub means the heart. The main point. I don't even make these sweets, and yet I have spent decades recommending them to others as my own, simply because I was an employee at Kurimeado. Even now, it makes me feel happy to hear them praised. But I no longer work for Kurimeado. It hurts to even say this. Miss Kamachi turns to look at me with an expression so composed that I have the urge to open up my heart to this large, pale woman, who, and this might sound impolite, is somehow not like other ordinary human beings. Beyond those eyes, I sense a large and magnanimous heart, open and accepting of everything. जिसको हम बड़ा दिल कहते हैं ना, उसका magnanimous heart, उसका मतलब वही है. I realize how badly I have been longing for someone to listen to me.
It has been my experience that for a company man like myself, retiring from work is the same as retiring from society. When I was working, I occasionally thought it would be nice to take some time off. But now that I actually do have the time, I don't know what to do with it. The remainder of my life feels meaningless. What do you mean by the remainder? Miss Kamachi explains without batting an eyelid. I ask myself the same thing. What do I mean by the remainder? The leftover part, I suppose. What remains, I say. She rolls her head in the opposite direction. Let's say you ate 10 honeycomb cookies from a box of 12. I beg your pardon? Would the last two be remainder? Okay, very deep thought on this, right? वो कह रहा था कि अभी तो मेरे में रिमाइंडर ऑफ माय लाइफ बची है, तो वो कह रही हैं कि आपका हर साल है जो आपकी लाइफ बची है वो पहली वाले से कम इम्पोर्टेंट नहीं है. तो बहुत इसमें बहुत गहरा इसका अर्थ है इसमें. I cannot answer straight away. This question, I suspect, touches on the heart of the matter, but I don't feel capable of voicing my answer. I keep mum. Miss Kamachi strengthens her back and turns to face the computer. She places both hands on the keyboard as if she was about to start playing the piano, and then proceeds to attack the keys at an astounding speed with a zoo da 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 da. It's miraculous the way her plump fingers move so swiftly. I'm still gaping with my mouth half open when she gives one final crash on the keys. Gaping, तब देख रहे घूर रहे हैं और बड़े आश्चर्य में हैं. Next moment, the printer begins printing and churns out a single sheet document. She hands it to me. I see it is a table with a list of book titles, with authors' names and shelf numbers. The basics of Go, defend and attack, starting Go from scratch, mastering Go for beginners, and lastly, this title, Chench and Frogs, with the words Junior Poetry Series next to it in brackets and the author's name, Shinpei Kusano. Poetry. Shinpei Kusano was a poet, it's true, but why this? While I examine the sheet of paper, Miss Komashi reaches into a wooden cabinet under the counter. She opens the bottom drawer, digs through the contents, and takes something out. Here, this is for you, she says, holding out her hand, bunched into a fist. I open my own hand, and Miss Kumashi drops a red, fluffy ball into it. The shape is squarish and it has two small scissor-like projections. Is this a crab? It's a bonus gift. Swiftly says, a bonus gift? Yes, a bonus to go with the books. Aha, I say, although I don't really understand. I ask about Go, but I get frogs and crabs. I look at my crab again. Its legs are quite realistic. तो जो जेंजे है ना, जो आया था किताब का जो टाइटल है जेंजे एंड फ्रॉग्स. जेंजे स्प्रिंग में है, एक वीड है, उसके पर्पल से फ्लावर होते हैं और जापान में फार्मर्स उनको प्लांट करते हैं इन बिटवीन क्रॉप्स और फिर उनको धरती में रहने देते हैं क्योंकि वो अच्छे हैं धरती के लिए और स्प्रिंग में आते हैं और फ्रॉग्स भी स्प्रिंग में आते हैं. तो ये कनेक्शन है और स्प्रिंग्स इज न्यू बिगिनिंग. सो ये इसका ये दोनों चीजें कि और ये
अच्छी चीजें हैं हमारे लिए. तो फ्रॉग्स उनको उनको बहुत अच्छी तरीके से देखा जाता है जापान में. Aha, I say, although I don't really understand. I asked about Go, but I get frogs and crabs. I look at my crab again. Its legs are quite realistic. This is called felting, Miss Komachi tells me. Felting बुनने के जैसे है. जैसे आप knitting के जैसे सोच सकते हो, पर और है थोड़ा तरीका, पर आप इस तरीके से सोच सकते हो. You can make things in any shape or size. There is no limit to what you can do with it. She does felting. Now that makes me envious. I wouldn't mind a hobby like this. Just one hobby would be enough. This kind of thing is also called work, handiwork, she says, in a meaningful tone. I beg your pardon, I ask. In response, she opens the lid of the honeydome box and resumes her handiwork. Looking down as she pokes at what I can now see is a ball of wool. It feels like a barrier has been put in place with the object of keeping people at bay. Sensing that any further discussion would be an imposition, I put the crab in my waistband and head for the stacks, taking the document with me. Imposition is कि जब आप किसी के मतलब वो आपके साथ जैसे इसके कॉन्टेक्स्ट में उसने चोर करना शुरू कर दिया, मतलब कि अब आप जाओ. अगर आप रहते तो आप imposition होते हैं उसके ऊपर. After dinner that evening, taking all the books I borrowed as recommended by Miss Kamachi, I retired to the spare room. It used to be Chie's bedroom. Chie is his daughter, who is living in Tokyo but living separately, and she's working somewhere and she's living separately. But ever since she moved out, we have used it as a combined storage and multi-purpose room. I purchased this 3-bedroom condominium at the age of 35 when it was brand new. Condominium is a set of buildings. Now it is falling into disrepair and showing its age. But since we hardly have visitors anymore, anything that doesn't inconvenience us is left as it is. There are stains on the walls, holes in the paper sliding doors, and squeaky hinges. We turned the Japanese-style tatami room into our bedroom and used the other one as a computer room. This is Yureko's domain. I hesitate even to set foot inside. So Japanese-style room is a room which has minimal furniture, and all the furniture is very low, and it's multi-purpose. So they'll put out mattresses to sleep at night, they'll use it something else in the course of the day. That's the Japanese-style room. I seat myself at Chia's old study desk and place the books in it. First, I flip through the Go textbooks. Although these are what I requested, I have to say they don't really excite me. I don't anticipate discovering any life or death dramas in them. The only book that stirs any kind of feeling in me is Ginge and Frog, the one I borrowed almost by mistake. The cover is a charming illustration of a country scene featuring 3 frogs with happy, relaxed faces. A stream cuts through the middle, flanked on both sides by pink cherry blossom-like balls. It's a bright, colorful crayon picture, exactly the kind of thing that would tempt a child to pick it up. I turn the pages until I come to an introduction entitled Relating to Poetry. The author is not Shinpei Kusano, but the editor Takashi Sawa. And the word junior in the title suggests the book is one of a series for children, written in suitably simple language. Yet Takashi Sawa still manages to convey loud and clear his passion for Shinpei Kusano and his poetry.
So Shinpei Kusano actually is a famous poet in Japan. He died, I think, in the 80s. He recommends transcribing any poem that you happen to like into a notebook. It can be the whole poem or just a section. In this way, you can create your own anthology. Anthology is a collection, and transcribe is typically used in the context of, let's say, voice to text. When you're in contact with the poet's soul and their attitude to life, your response to their poetry becomes even more powerful. You can, in a sense, even enter into the life of that poet and feel moved in the same way. I don't think Brinda Ma'am will be here, but Brinda Ma'am loves poetry. And we used to have sessions as a part of the Good School Alliance when she used to read poetry to us. And those are actually wonderful sessions which we used to have. In fact, I was telling Sandeep the other day that how good they used to be. Because the point around the poetry is that you have to actually you have to feel it and you have to really understand it, and that's why there's talk of getting into the poet's soul. I wonder about that. It seems rather an exaggeration to say we could enter into the life of the poet. Then I read the line, and if you too feel the urge to write poetry yourself, by all means, please do so. Which makes me laugh out loud. Definitely not. But I could transcribe verse. Simply writing down part of a poem sounds easy enough. And the word anthology has a nice ring to it. It sounds clever. It would. Illustration is like a drawing. It'd be easier than learning Go, I expect. Yet still count as an intellectual activity. I like the sound of this. But I need a notebook. I rummage through the desk drawers and fish out an old ruled college notebook. The first 2 pages have something short, some short sentences in English, and the alphabet is in my handwriting. I'd forgotten this. About 20 years ago, I attempted to study English through a course on the radio. Even I had a modicum of ambition to learn. Sorry, let me read it again. Even I had a modicum of ambition to learn. Modicum is a little bit. I have the feeling I thought it might be useful for work, or maybe I just wanted a new interest. But I remember thinking that after 40 years, it was too late to learn anything and soon gave up. If I'd kept it up and studied 1 page a day, I might be fluent now. So what percent of Japanese do you think can speak English? Take a guess if you don't know. What percent of Japanese do you think can speak English? जापान में कितने लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं? आपको क्या लगता है? What percentage of Japanese can speak English? Yeah, I know you don't know. I'm asking you to take a guess. 39%. That's a very precise number, but I don't think so. So I used to travel a lot to Japan late 90s, and I was very surprised. The percentage actually is quite small, even in smaller companies. So it's quite surprising. You would expect that a large percentage would actually be speaking English. That's the impression at least I had. But actually, it's small. I don't think it's 39. I think it's actually less. But anyway, you can Google it and find out. Well, it will never be filled with English. I tear out the pages and turn it into a fresh notebook. Then I turn it into its side to write vertically Japanese style. तो आपको पता है जापानीज कैसे लिखते हैं? 2 तरीके से लिखते हैं.
think online they write how English was written, but traditional Japanese, जैसे उनके newspaper भी होते थे. I remember staying there and seeing people read newspapers, and I just find it very funny because they used to start the newspaper from what we think is the back. So they write ऊपर से नीचे, right to left. That's how it's normally written. So पढ़ने में भी जो जैसे अखबार पढ़ रहे हैं तो वो जो हमारा लास्ट पेज है वहां से शुरू करेंगे और एक्सट्रीम राइट हैंड कॉर्नर टॉप से शुरू करेंगे. So that is how Japanese traditional newspapers were, and that's how it was. After reading 3 poems in Genge and Frogs, I copy down the first one, Song of Spirit, with a marker pen that I find in the pen stand. Oh, it's so bright. Oh, happy day. Smooth water, gentle wind. Keru, run, kiu, are wonderful smells. That's more. There's more, but I put the pen down here. The line Keru, run, cuckoo is repeated 4 times in all, and I guess it's the call of a frog. It has a nice rhythm and cleverly matches the beat of the poem. Time goes by as I become absorbed in reading all the poems. I'd assumed the tone of the rest would be as light and bright as Song of Spring, but some are wistful and some are dark. There is quite a variety. Wistful is जो आपको मतलब पुराने समय के बारे में याद दिलाती है और मतलब याद थोड़ी मीठी नहीं होती. Then I came across one called Kajika. It's a strange poem. Ki 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 ki. Kiru 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 kiru. From the first line, it has a striking sound. The more I transcribe, the more its mystery deepens. What makes this sound? Isn't a kajika a type of fish? Or maybe it's a deer. There's no explanation, and I can't work it out. I can't even picture what the phrases nigh, caught in the borderline of flicker of gills might be describing. I get as far as copying ki 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 ki, then stop. Understanding poetry is not as easy as it seems. Could it be even more challenging than learning the rules of Go? I close the notebook. The next afternoon, Yuriko and I go on an outing to a big store called Eden, a place I'm not familiar with. But Yuriko recently learned that a student from her company, from her computer class, works in the women's wear department there, and she wants to go shopping. Yuriko is what you might call a driver on paper. She nominally has a driving license, but never actually drives. And since Eden is too far to go on foot, she has asked me to take her there today. I see no reason not to. So Eden, first chapter, we had read this story of Tomoka, and Tomoka went and joined computer class in the community center, and Yuriko Gono was her teacher. As I said earlier, we'd already come across Hiroya in this chapter. He's the guy in the green shirt, and now we're going to come across Tomoka. On our way to the car park in our building, she spies the building superintendent, Mr. Ebigawa, and calls out to him. He is in his early old age, I guess, and replaced the previous superintendent at the beginning of the year. He's in the middle of pulling weeds from the shrubbery and turns to look at us. Yuriko bows with a smile. Thank you for your help the other day. I cleaned my bicycle as you suggested, and the brakes work much better now. Last week, when she ran into Mr. Ebigawa at the bicycle parking area, he gave us some advice on how to use detergent to clean a part called the brake shoe to improve the effectiveness of her brakes.
You're welcome. I'm glad it did the trick. I used to have a bicycle shop a long time ago. He gives a mellow smile. Mellow is a mild, soft, and goes back to pulling weeds. Mr. Ebigawa is not surly, but he is by no means a man of many words. Surly is मतलब जो बहुत बोलता नहीं है और थोड़ा देख मतलब गुस्से से देखता हो. Mr. Ebigawa looks like a completely different person whenever I bump into him away from here. Rico says once we are out of earshot, when he is not in his work clothes, he always wears a smart knitted cap. Maybe that's why. A different person? In what way? It's hard to say. He looks like an ascetic sage who lives in the mountains. Sadhu Jaisa. Someone who is not part of the mundane world. But when he is in his superintendent's uniform and sitting in the office, he looks just like any ordinary person. When we arrive at Eden, I park the car and Yuriko leads me straight to the women's bed department upstairs. Tomoka, the sales assistant's face breaks into a big smile. Mrs. Gono, you really came. Welcome. Yes, I made it. This is my husband, Masao. Tomoka gives a beautiful bow with both hands placed precisely together in front of her. It's my pleasure to meet you. I'm indebted to your wife. Not at all. The pleasure is mine. Like Mr. Ebigawa, Tomoka is another of Yuriko's acquaintances. Sometimes it feels as if she is my only link to society now. Yuriko begins to rummage through the clothes while I twiddle my thumbs, gazing around at all the blouses and skirts they are in the store. I don't know if you all use this expression, twiddle your thumb, but I mean, in our time that meant basically you had nothing to do and you're literally sitting and twiddling your thumbs. I estimate Demoka to be in her early 20s. She seems to be an energetic and efficient young lady. She certainly gives the impression of being cheerful and enthusiastic about her work. May I try this on? Eureka holds up a dress. Yes, of course, Tomoko replies, opening the curtain to the fitting room. When the two of us are on our own, Tomoka makes conversation with me. How lovely that you go shopping as a couple. You must get along well. I probably get in her way now, but now that I'm home all the time, I can't even do the housework. I wish I could at least cook, but it's not easy. Tomoka appears to think this for a few moments. Then, with a bright smile, she says, why don't you try making rice balls? Rice balls? Do you think my wife would like that? I'm sure she'd love it. Rice balls made by men taste really good. Maybe it's because they have strong hands that can firmly shape the rice. In any case, I'm sure Mrs. Gono would be thrilled if you made her some. Thrilled? Do you think so? I say with a smile. Did your boyfriend happen to make rice balls for you, perhaps? Tomoka's cheeks turn bright red, but she does not deny it. We'll stop here, Manisha. So, in the first chapter, when we were reading about Tomoka and her life in the store, so Kiriyama also used to work in Eden in a different department, Zaz, and I think Natsumi was there in chapter 3, I think. Yeah, Natsumi went to Kiriyama and Zaz. And so Tomoka never used to cook, and her house was a big mess. And she went to the library and she got a book, and that sort of and a few other things that she did and that changed her life. And she started to cook. And in that story, it didn't sort of suggest that
that Kiriyama was her boyfriend, but that was my sense, and that's the feeling one got when that story ended. And I think I may have mentioned it as well. So you can see here that she's blushing. So clearly, maybe if there's a sequel to this book, that may be the story. So let me stop here, Manisha Ma'am. We are at 11:56, and let me hand it over to you. Sorry, there are lots of chat messages, but इतने सारे हैं, some of them are no use, so it's just not possible to keep track and answer. Somebody has some genuine question. अगर कोई genuine question होता है तो वो आपके इतने जो फजूल chat आप डाल रहे हैं उसमें गुम जा रहा है. तो it's not helping the children जो सीखना चाह रहे हैं, जिनके पास genuine सवाल है. Okay, Manisha ma'am, over to you. थैंक यू सो मच सर. आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं एंड ज्यादातर जो मुझे समझ में आया है वो ये है कि चूंकि आप नए हैं तो आपको आइडिया ही नहीं हो पा रहा था कि क्या हो रहा है. तो यहाँ पे हम सिर्फ बुक रीडिंग करते हैं, कहानियां सुनते और सुनाते हैं. किस लिए सुनते सुनाते हैं? सबसे बड़ी बात है कि कहानियों के जरिए हम आपको ये बताना और समझाना चाहते हैं कि लैंग्वेज कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से करेक्ट कम्युनिकेट करके आपस में न सिर्फ हम बात कर सकते हैं, अपने मन की बात को हम समझा भी सकते हैं. और चूंकि पढ़ाई में आप सब बहुत अच्छे हैं बट आपकी नॉलेज रेस्ट्रिक्टेड है टॉपिक्स के रिलेटेड, सब्जेक्ट के रिलेटेड, और दुनिया पढ़ाई से बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है. उसमें स्किल्स की जरूरत है लाइफ को अच्छे से समझने के लिए और लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए. तो जब हम स्किल्स की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है रीडिंग, पढ़ना, समझना और अपनी बात दूसरों को समझाना. तो ये एक ऐसी स्किल है जो हम डेवलप करना चाह रहे हैं आप सब में. इसीलिए हमारा ये जो संडे का 2 घंटे का प्लेटफॉर्म है, हम इसमें रीड करते हैं. अभी आपने देखा जुगजीव सर ने कहानी पढ़ी है, उनकी किताब का नाम है व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इज इन द लाइब्रेरी. वृंदा मैम जो सबसे पहले आई थी उन्होंने किताब पढ़ी थी माई फैमिली एंड अदर एनिमल्स. और मेरा नाम मनीषा है, आपको स्क्रीन में दिख ही रहा होगा. मैं पढ़ना चाह रही हूँ रस्किन बॉन्ड की कहानी टाइम स्टॉप्स एट शामली. ये सारी ही किताबें ऑनलाइन अवेलेबल है एंड हार्ड कॉपी में भी है. हम नहीं चाहते कि आप किताब खरीदें, इसलिए हम स्क्रीन शेयर करते हैं और उसमें हम आपको दिखाते हैं कि कौन सी किताब है और कैसे हम पढ़ रहे हैं. चूंकि पूरी किताब आधे पौने घंटे में खत्म नहीं हो सकती, तो ये कुछ कहानियां हमारी कंटिन्यूअस रहती है. जो छोटी छोटी कहानियां हैं वो हम एक में पढ़ लेते हैं. जैसे कि रस्किन बॉन्ड की कहानी हम एक बार में पढ़ लेते हैं, बट पिछली बार जो हमने कहानी शुरू करी है बाघ राजा, वो थोड़ी बड़ी है, तो वो बड़ी होने के कारण 3 बार 4 बार में हो पा रही है. तो अभी आज मैं फिर से उसी कहानी को आगे पढ़ना चाहूंगी. छोटा सा आपको मैं सारांश बताती हूँ उस कहानी का, बाघ राजा. ये एक समझदार बाघ की कहानी है. बाघ यानी कि टाइगर, जो जंगल में मनुष्यों द्वारा किए जा रहे शिकार और अत्याचार को देखता है. ज्यादातर हम ये देख रहे हैं कि चूंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो हम जंगल की तरफ जाते जा रहे हैं और वहां पे हम जंगल को खत्म करके अपने मकान और घर या फिर अपने फार्म हाउसेस बना रहे हैं, जिसके कारण एनिमल्स को थोड़ी सी परेशानी हो रही है. और ये जो बाघ है, जो टाइगर है, ये लोगों को देखता है, समझता है और कोशिश करता है कि उनको परेशान नहीं करे. अपने और बाघ जो है अपने अनुभव और बुद्धिमत्ता के कारण वो शिकारों से बच भी जाता है और अपना पेट भी पाल लेता है. वो जंगल के ही जानवरों को खाने में ज्यादा व्यस्त रहता है और कोशिश करता है कि वो पेट एनिमल्स को नहीं खाए और उनको छोड़ दे. तो वो अपने ही एक्सपीरियंस से सीख रहा है और कहानी को आगे बढ़ाता है. ये कहानी हमें एम्पैथी भी सिखाती है वन्य जीवों के प्रति, क्योंकि हम मनुष्य क्या करते हैं, कई बार हम संवेदनशील हो जाते हैं, हम समझ नहीं पाते कि क्या करना है, कैसे करना है. एंड मुझे क्या पसंद है इस बारे पे विचार करते हैं. सबको क्या पसंद है, कम्युनिटी को क्या पसंद है, ये हम नहीं समझ पाते. जैसे कि अभी सर जापान के बारे में बोल रहे थे, जापान की कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा एकता में विश्वास रखती है और वो मी माई सेल्फ की जगह वो विश्वास करती है वी में, WEV. तो वी कम्युनिटी के हिसाब से वो आगे बढ़ना चाहती है और एक आदमी सिर्फ अपने ही बारे में नहीं, एक अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है. तो चलिए हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं इसमें क्या होगा. आपके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा वेलकम है, बाकी सब चीजें भी है, पर प्लीज ज्यादा आपस में बात मत करिए.
और आप देखिए कि कहानी में क्या होता है। सृष्टि, आपने हाथ उठाया, आप कुछ कहना चाहेंगी? क्योंकि मैं देखती हूँ आप अनम्यूट है कि नहीं, फिर मैं आपको बताती हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ जी सृष्टि, आप कुछ कहना चाहेंगी? ठीक है, नहीं आप कहना चाहेंगी तो चलिए हम बुक रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? जुगजीव सर स्क्रीन दिख रही है? आ गई आ गई। चलिए, थैंक यू सो मच। तो चूंकि मैंने आपको बताया कि ये एनिमल्स की कहानी है, इसमें बाघ रहता है और हमेशा वो कोशिश करता है कि वो नहीं मारे, उसका कोई शिकार नहीं करे और अपने एक्सपीरियंस से सीख करके वो आगे बढ़ता है। पर कई बार ये पॉसिबल नहीं भी हो पाता है और वो बहुत ज्यादा परेशान भी हो रहा है। तो कहानी में आगे, कुंदन सिंह मूंछों ही मूंछों में मुस्कुराया, कुछ देर अपनी मूंछों की नोक से खेलता रहा और फिर बहुत गर्व के साथ उसने अपनी खाट के नीचे से एक पुरानी 2 नाली बंदूक निकाली। मेरे पिता ने इसे एक अंग्रेज से खरीदा था, उन्होंने कहा। कितने समय पहले खरीदा था? मेरे जन्म के बाद। और क्या तुमने कभी इसका इस्तेमाल किया है? रामू के पिता ने पूछा। उन्हें यकीन नहीं था कि बंदूक काम करेगी। हाँ हाँ, कुछ साल पहले मैंने इससे कुछ डकैतों पर गोली चलाई थी, तुम्हें याद है? जब उन डकैतों ने हमारे गांव पर हमला, सॉरी, धावा बोला था, उन्होंने गलत गांव को चुना था। गांव वालों ने उनकी खूब पिटाई की थी। जब वे भाग रहे थे तो मैंने अपनी बंदूक से उन पर गोली चलाई थी। वे गंगा पार करने तक दौड़ते चले गए थे। हाँ, लेकिन क्या तुमने इससे किसी को मारा था? मैं जरूर मारता, अगर किसी की बकरी आखिरी समय में बीच में नहीं आ जाती। लेकिन उस रात हमने भुना मटन खाया था। चिंता मत करो भाई, मैं इसे गोली चलाना चाहता हूँ। रामू के पिता और कुछ अन्य लोगों के साथ कुंदन झील के लिए निकल गया। वहां भैंस के शव को हाथ लगाए बिना उन्होंने उससे करीब 30 फुट दूर पेड़ पर लंबी शाखाओं में एक और मचान बनाया। वे जानते थे कि अगर बाघ को जाल बिछाने का शक हो गया तो वह उनके पास फटकेगा भी नहीं। बाद में उस शाम गोधूली के समय कुंदन सिंह और रामू के पिता पेड़ पर मचान पर रात बिताने के लिए बैठ गए। तो यहाँ मचान पे वो इसलिए बैठे क्योंकि वो शिकार करना चाह रहे थे शेर का। और शिकार कर पाते हैं कि नहीं, आगे देखते हैं कहानी में। कई घंटे बीत गए और उन दोनों को एक सियार के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। और फिर जैसे ही चांद दूर की पहाड़ियों के ऊपर आया, कुंदन और उसके साथी एक हल्की आ ऊ से चौंक गए। उसके बाद एक दबी दबी सी कुर्राहट हुई। कुंदन ने अपनी पुरानी बंदूक पकड़ ली, जबकि उसका दोस्त उसे हौसला देने के लिए उसके करीब आ गया। 1 या 2 मिनट के लिए पूरी तरह से सन्नाटा था, जो उन लोग दोनों के लिए एक रहस्यमय पीड़ा जैसा था। और फिर पेड़ों के नीचे झड़ी पत्तियों पर धीमी हल्की चाल से चलने की आवाज आई। एक क्षण बाद बाघ चांदनी में आकर अपने शिकार के पास खड़ा हो गया। पहले तो कुंदन कुछ नहीं कर सका, वह इस शानदार बाघ के आकार को देखकर दंग रह गया था। रामू के पिता उसे धक्का देना पड़ा और तब कुंदन ने जल्दी से अपने कंधे पर बंदूक रखकर बाघ के सिर पर निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया। जैसे ही कुंदन ने दोनों बैरल दागे, बंदूक की एक चमक और 2 जोरदार धमाके हुए। तभी एक जबरदस्त गर्जना हुई। उसमें से एक गोली बाघ के सिर में लगी। गुस्सा आया जानवर पेड़ पर चढ़ गया और उसने शाखाओं में कूदने की कोशिश की। सौभाग्य से मचान सुरक्षित ऊंचाई पर बना हुआ था और बाघ उस तक नहीं पहुंच पा रहा था। यह फिर से दहाड़ा और उसके बाद जंगल की ओर चला गया। क्या बाघ है, कुंदन ने आधा डरकर और आधा तारीफ में कहा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कलेजा पानी हो गया है। रामू के पिता ने कहा, तुम्हारा निशाना चूक गया, तुम्हारी बंदूक बहुत शोर करती है, बाघ को तीर ज्यादा नुकसान पहुंचाता। मेरा निशाना चूका नहीं, कुंदन ने नाराजगी से कहा। तुमने उसे दहाड़ते सुना है ना? अगर उसे गोली न लगी होती
तो क्या उसे इतना गुस्सा आता? अगर मैंने उसे पूरी बुरी तरह घायल किया है तो वह मर जाएगा, और अगर तुमने उसे जरा सा जख्मी किया है तो वह आदमखोर हो सकता है, और फिर हमारा क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि वह वापस आएगा, कुंदन ने कहा। वह इन जंगलों को छोड़ देगा। वे पेड़ से नीचे आने से पहले सूरज उगने तक इंतजार करते रहे। उन्हें सूखी घास पर खून की कुछ बूंदें मिली, लेकिन कोई निशान जंगल में नहीं गया था। इससे रामू के पिता को यकीन हो गया कि घाव केवल मामूली था। गोली कान के पीछे घातक स्थान को चुभते हुए केवल खोपड़ी के पिछले हिस्से में लगी थी, और उसने वहां नीचे एक गहरा घाव कर दिया था। उसे ठीक होने में कुछ दिन लग गए, और इस दौरान बाघ निश्चल लेटा रहा। वह दिन के उजाले में झील के पास नहीं गया, केवल बहुत अंधेरा होने और बहुत प्यासा होने पर वहां जाता था। ग्रामीणों ने सोचा कि बाघ चला गया है। रामू और श्याम कुछ और लड़कों के साथ और हमेशा कुल्हाड़ियों और लाठियां लेकर दिन में फिर से भैंसों को झील तक ले जाने लगे, लेकिन वे इस बात का ध्यान रखते थे कि उनमें से कोई भी झुंड से दूर न भटक जाए, और वे दिन के उजाले में ही अपने घर लौट आए। जंगल को आग से तबाह हुए कुछ दिन हो गए थे, और उष्ण कटिबंध में नुकसान की भरपाई जल्दी हो जाती। सूखा मौसम होने के बावजूद जंगल में नया जीवन आकार ले रहा था। जबकि भैंसें कीचड़ भरे पानी में लौट रही थी और लड़के अपने घास के टापू पर कुश्ती लड़ रहे थे, तो एक बड़ी पीली चील भोजन की तलाश में उनके ऊपर ऊंची उड़ गई। यह एक साफ इशारा था कि कुछ जानवर जंगल में लौटने लगे थे। झाड़ी थोड़ी ही देर में उनकी पैनी निगाहों ने नीचे घास के मैदान में कुछ हलचल देखी। चील ने अपनी तेज नजर से एक छोटा खरगोश देखा था, एक छोटा सा रोएदार जीव जिसके लंबे गुलाबी कान किनारों पर सपाट थे। अगर वह दो बड़े बीच रेंगता हुआ ना होता तो चील की नजर से बच जाता। चील यह देखने के लिए इंतजार कर रही थी कि क्या उसकी माँ भी साथ में है। इंतजार करते हुए उसने महसूस किया कि इस रसीले निवाले के लालच में घात लगाने वाले वह अकेली नहीं है। झाड़ियों में एक सर्पिल पीला प्राणी दिखाई दिया, जो जमीन पर रेंगते हुए तेजी से खरगोश की ओर बढ़ रहा था। यह एक पीली जंगली बिल्ली थी, जो जली हुई घास में बमुश्किल दिखाई देती थी। बहुत चुपके से जंगली बिल्ली ने खरगोश के बच्चे का पीछा करना शुरू कर दिया। उसने झपट्टा मारा। बिल्ली के क्रूर पंजों के चंगुल में आने से खरगोश की चीख दब गई, लेकिन यह चीख खरगोश की मां ने सुन ली, जो अब तक घास के मैदान में आराम कर रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के वो हैरानी में बिल्ली की ओर लपकी। मां खरगोश का हमला सदा हुआ था। वह बिल्ली के पीछे इधर उधर भागी और सफाई से उसके ऊपर कूद गई। उस पर कूदने उस पर कूदते ही उसने पीछे की ओर लात मारी, जिससे बिल्ली के चेहरे पर धूल का गुब्बार उड़ा। उसने बार बार ऐसा किया। घबराई हुई बिल्ली ने झुककर और गुर्राते हुए शिकार को उठाकर भागने की कोशिश की, लेकिन खरगोश ने उसकी एक न चलने दी। उसने अपनी छलांग और बुदबुदाहट जारी रखी, जब तक कि बिल्ली ने हताशा में अपने शिकार को छोड़कर मां पर हमला नहीं कर दिया। तो यहाँ एक मां के बारे में भी बताया जा रहा है। जैसे हम सभी इंसान अपने बच्चों को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, और एक माँ और एक बच्चे का बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है। ऐसे जानवरों में भी होता है। ना सिर्फ वो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उनके लिए अपनी जान पे भी खेल जाते हैं। तो यहाँ खरगोश की जो कहानी सामने आई है, ये क्लियर एग्जाम्पल है कि कैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए अपनी जान पे खेल जाती है, और किस तरीके से उसे सुरक्षित रखने के लिए कोई भी पीड़ा ले सकती है। बिल्ली अपने पंजों से मारते हुए कई बार खरगोश पर उछली,
लेकिन खरगोश की माँ इतनी चतुर और फुर्तीली थी कि वह उन भयानक पंजों की पहुंच से दूर ही रही। इस तरह वह बच्चों को अपने बच, बच्चे से और दूर ले गई, क्योंकि वह अभी तक नहीं जानती थी कि उसका बच्चा तो मर चुका है। पीली चील ने अपना मौका देखा। उसने तेजी से सदा हुआ झपट्टा मारा। जैसे ही उसने प्यारे छोटे खरगोश के ऊपर अपने पंख फैलाए और उसके पंजे उसमें गहरे धंस गए, उसी पल उसने बिल्ली की एक झलक अपनी ओर दौड़ते हुए देखी और माँ खरगोश को झाड़ियों में भागते हुए देखा। और फिर कामयाबी की तीखी खियेई करते हुए वह चट करने के लिए अपने शिकार को लेकर उड़ गई। तो जब दो लोग झगड़ा करते हैं, या इसमें तीसरे का बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। इसकी ऐसी कई सारी कहानियां हमने आज तक सुनी है और समझी भी है। रोटी के टुकड़ों के लिए कैसे बंदर झगड़ा कर रहे थे और किस तरीके से बिल्ली आकर के उनकी खा लेती है रोटियां, ये कहानी भी आपने सुनी हो। तो हमेशा यही एडवाइस किया जाता है कि बच्चों को कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप झगड़ा करते हैं, परेशान होते हैं, तो कोई तीसरा हमेशा ही उसका फायदा उठाता है। इस कहानी में भी ऐसा ही हुआ। खरगोश और बिल्ली लड़ रहे थे, तो फायदा किसको हुआ? माँ अपने बच्चे को भी नहीं बचा पाई और बिल्ली भी बच्चे को नहीं ले जा पाई, और लेके कौन गया? चील उठा के बच्चे को ले गई। लड़कों ने उसकी कर्कश चीख सुनी थी और उसी समय उन्होंने ऊपर देखा तो चील को अपने पंजों में मजबूती से पकड़े हुए छोटे खरगोश के साथ झील के ऊपर से उड़ते हुए पाया। बेचारा खरगोश, शाम ने कहा, इसका जीवन छोटा था। यह जंगल का कानून है, राम ने कहा। चील का भी परिवार होता है और उसे भी उसका पालन पोषण करना है। मुझे अचरज होता है कि क्या हम जानवरों से बेहतर हैं, शाम ने कहा। शायद हम कुछ मायनों में थोड़े बेहतर हैं, रामू बोला। दादा हमेशा कहते हैं कि हंसने में सक्षम होना और दयालु होना ही ऐसी चीजें हैं जो मनुष्यों को जानवर से बेहतर बनाती है। अगले दिन जब लड़के झुंड को घर ले जा रहे थे, तो उनमें से एक भैंस पीछे रह गई। रामू को तब तक ये एहसास नहीं हुआ कि एक जानवर का है, जब तक कि उसने अपने पीछे एक दर्द भरी चीख नहीं सुनी। उसने ठीक उसी समय पीछे नजर डाली और देखा कि एक बड़ा धारीदार बाघ उसकी भैंस को बांस के झुंड में घसीट रहा है। उसी समय झुंड को खतरे का आभास हो गया और जंगल के रास्ते से भागते हुए भैंसे डरकर हवा में सूंघने लगे। उन्हें आगे बढ़ाने के लिए और अपने दोस्तों को चेतावनी देने के लिए रामू ने अपने हाथों को अपने मुंह पर थपथपाया और एक जोरदार आवाज निकाली। भैंसे रंभा रही थी, लड़के चिल्ला रहे थे और चिड़िया पेड़ों से शोर मचा रही थी। जब तक झुंड जंगल से निकला, तब तक लगभग भगदड़ मच चुकी थी। ग्रामीणों ने उनके रंभाने की आवाज सुनी और झुंड को धूल और भ्रम के बादलों के बीच घर आते देखा। वे समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। बाघ, रामू चिल्लाया, वह यही है। उसने एक भैंस को मार डाला है, शाम ने कहा। वह अब हमसे नहीं डरता। क्या तुमने देखा कि वो किस ओर गया है? कुंदन सिंह ने तेजी से उनके पास आते हुए पूछा। मुझे जगह याद है, रामू ने कहा। उसने भैंस को बांस के झुरमुट के बीच घसीटा था। हमारे पास खोने के लिए समय नहीं है, उसके पिता ने कहा। कुंदन, तुम अपनी बंदूक और 2 आदमी लेकर झूला पुल के पास रुको, जहां गरुड़ की धारा गंगा में मिलती है। वहां जंगल संकरा है। हम अपनी ओर से जंगल में हाका देंगे और बाघ को तुम्हारी ओर बुलाएंगे। तब हम से तभी वह हमसे तभी बच पाएगा अगर वह नदी में तैरकर निकल जाए। अच्छा, कुंदन ने अपनी बंदूक के लिए दौड़कर घर में जाते हुए कहा। क्या यह हमारी भैंसों में से एक थी? श्याम उसके पीछे पीछे गया। इस बार रामू की भैंस थी, श्याम ने कहा। दूध देने वाली एक अच्छी भैंस। फिर तो रामू का बाप जंगल में खूब जोर का हाका लगाएगा।
बेहतर होगा कि तुम लड़के मेरे साथ आओ। हाका लगाने वाले का साथ देना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। कुंदन सिंह अपनी बंदूक लेकर रामू, श्याम और दो लोगों के साथ नदी जंक्शन की ओर बढ़े, जबकि रामू के पिता ने गांव के लगभग 20 लोगों को इकट्ठा किया और रामू के साथ मौजूद रहे और लड़कों और लड़के के मार्गदर्शन में उस जगह की ओर रवाना हुए जहां बाघ ने भैंस को मार डाला था। यहाँ थोड़ा सा मैं पॉज लेती हूँ और मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से बाघ भैंस को उठा के लेके गया और सभी लोग परेशान हो गए और वो बाघ के पीछे भागे, तो इस सिनेरियो में आपको ऐसा लगता है कि कुछ और हो सकता था या कहानी किसी और तरीके से घुमाई जा सकती थी, या आप चाहेंगे कि यहाँ पे कहानी को कोई और रूप दिया जा सके? आपको क्या लगता है? अच्छा, चेंज कर सकते हैं, कुछ शब्दों को ऐड कर सकते हैं, बट क्या शब्द आप ऐड करना चाहेंगे? कहानी को किस तरह आप चेंज करना चाहेंगे? किस रूप में आप पसंद करेंगे उसे? अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हम नहीं चेंज करना चाहेंगे। तो आपको ऐसा लगता है कि जंगलों में इंसानों का जाके रहना सही है कि गलत है? हमें क्या करना चाहिए? जंगल के पास जाके रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? गलत है। क्यों गलत है? ठीक है, गलत है, पर क्यों गलत है? कारण क्या है? कोई बताना चाहेगा? जंगल जानवरों के परिवार के लिए है। ओके, दैट्स गुड। अभी किसी ने निश्चल का मतलब पूछा था। निश्चल मतलब काम। जिस मैम, तरीके से पॉपुलर। पुराने हाँ जी समय सर। में पुराने समय में बहुत ट्राइब्स रहती थी जंगलों में। अभी भी कुछ समय पहले मैं पढ़ रहा था, अखबार में ही आया था, एक केरला की ट्राइब है, या सॉरी अंडमान में है, आई फॉरगॉट, अंडमान में तो है ही है, पर केरला में भी है, जो मतलब अभी भी उसी तरीके से रह रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं। पर जो पुरानी ट्राइब्स होती थी वो नेचर के बीच में रहती थी, नेचर को रिस्पेक्ट करते हैं, और वो मतलब जैसे मतलब जानवर के बीच में रह सकते हैं, जानवर भी उनके बीच में रह सकते हैं, वो मतलब उनका आपस में रिस्पेक्ट है। तो पहले तो लोग, बहुत लोग रहते थे ना वन में, तो पर वो रहने का तरीका अलग था। सर्टनली सर, थैंक यू सो मच। क्योंकि जब शुरुआत ही हुई थी आपकी, जब, तो वही हंटिंग से ही स्टार्ट हुई थी और जंगलों में ही सब लोग स्टार्ट स्टार्ट करे थे। उसके बाद ही जब आदि मानव की आप अगर कहानियां सुनते हैं या हिस्ट्री में आप पीछे जाकर के देखते हैं अर्ली ह्यूमंस के बारे में, तो वहीं से ही सब लोग एक साथ ही जंगल में रहते थे और वो रिस्पेक्ट करते थे। फॉर एग्जाम्पल, केव अगर है और वहां पे कोई लायन रह रहा है या कोई और एनिमल रह रहा है, तो वो कभी भी वहां पे अपना घर नहीं बनाते थे, उससे हट करके बनाते थे और उसको रिस्पेक्ट करते थे। तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट के साथ ही वो आगे बढ़ते थे। और अभी भी कई इंडिया में ट्राइब्स हैं जो जंगलों के पास रहना चाहती है और उनका अपना प्रॉपर पक्का घर नहीं है और जंगलों के आसपास ही वो रहते हैं। बट यस, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जैसे अभी बच्चे भी आपस में मैसेज में लिख रहे हैं कि किस तरीके से हम जंगल में रहेंगे तो पेड़ को काटेंगे, जानवरों को नुकसान पहुंचाएंगे और आगे नुकसान पहुंचाने के कारण वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है और सर्वाइवल के लिए रिसोर्सेज भी हमें नहीं मिल सकते हैं। तो सब कुछ की एक लिमिट होती है, and जब वो लिमिट खत्म हो जाती है तो नेचुरली
प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। सो अंडरस्टैंडिंग लिमिट्स और क्या हमें जरूरी है वो हमें देखना चाहिए, क्योंकि नेचर के पास हमारे नीड के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बट हमारी ग्रीड के लिए चीजें काफी कम है। तो हमें नेचर से नीड के हिसाब से चीजें लेनी चाहिए, न कि अपने ग्रीड के लिए। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं कहानी को। बाघ अब भी खा ही रहा था जब उसने लोगों के आने की आहट सुनी। उसे इतनी जल्दी परेशान होने की उम्मीद नहीं थी। गुस्से में हुफ की आवाज के साथ वह बांस के एक झुरमुट में घुस गया और पत्तियों और लंबी घास में छिपकर उन लोगों को देखता रहा। लोगों ने मृत भैंस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अपने नेता के पास इकट्ठा होकर चर्चा करने लगे। उनमें से ज्यादातर ने अपने कंधे पर ढोल लटकाए हुए थे। वे लाठियां, भाले और फरसे भी लिए हुए थे। जल्दीबाजी में चर्चा करके वे अपने हाथों की हथेलियों से ढोल पीटते हुए जंगल के घने हिस्से में घुस गए। कुछ लोगों ने मिट्टी के तेल के खाली डब्बे पीटना शुरू कर दिया। ये नगाड़े से भी ज्यादा शोर करते थे। बाघ को शोर पसंद नहीं आया और वह जंगल में और पीछे हट गया। लेकिन उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि लोग दूर जाने के बजाय ढोल और टीन बजाते हुए और ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए उसके पीछे जंगल में आ गए। वे अब अलग अलग हो गए थे और अकेले या जोड़े में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कहीं भी उनके बीच 15 गज से ज्यादा दूरी नहीं थी। बाघ उनके धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले इस अर्ध वृत्त को आसानी से तोड़ सकता था। उनके पंजे के एक तेज वार से उनमें से सबसे मजबूत इंसान भी गिर जाता, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य शोर से दूर होना था। वह इंसानों के शोर से नफरत करता था और डरता भी था। वह एक आदमखोर बाघ नहीं था और वो किसी इंसान पर तब तक हमला नहीं करता था जब तक कि वो बहुत गुस्से में या डरा हुआ या बहुत हताश न हो। और वह अब तक इनमें से कुछ भी नहीं था। उसने भरपेट खाया हुआ था और वह शांति से आराम करना पसंद करता। लेकिन किसी भी जानवर को तब तक आराम मैसर नहीं होता जब तक कि इंसान अपनी जबरदस्त खड़खड़ाहट और शोरगुल बंद नहीं कर देते। तो शोरगुल तो देखिए किसी को भी पसंद नहीं होता है। हम भी जब सोने जाते हैं और कोई शोर होती है, कोई आवाज आती है, तो हमें नींद में खलल होता है। उसी तरीके से एनिमल्स के साथ भी है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बाघ को भी आराम करना चाहता था क्योंकि उसका पेट भर गया था, पर शोर में वो कैसे ही सो पाएगा। 1 घंटे तक रामू के पिता और बाकी लोग ढोल पीटते और शोर मचाते हुए जंगल और झाड़ियों को रोकते रहे। बाघ को कोई आराम नहीं मिला था। जब भी वो लोगों से दूर जाता तो वह आराम करने के लिए किसी छायादार स्थान पर बैठ जाता, लेकिन 5 या 10 मिनट के भीतर शोर और ढोल बजाने की आवाज करीब आ जाती और बाघ गुस्से में उठकर उत्तर की ओर बढ़ने लगता। वह चुपचाप जंगल की संकरी पट्टी के साथ उत्तर की ओर गंगा में गरुड़ धारा के मुहाने की ओर चलने लगा। 10 साल पहले उसके पास छिपने के लिए उसके दाईं ओर जंगल हुआ करता था, लेकिन इंसानों और घरों के लिए रास्ता बनाने की खातिर पेड़ों को बहुत पहले ही काट दिया गया था। इसलिए अब वह केवल नदी की बाईं ओर ही जा सकता था। तो मैं यहाँ पे कहानी को पॉज देना चाहूंगी। तो अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से इंसान भी बहुत ही ज्यादा परेशान थे जानवर के कारण, क्योंकि जो उनके पेट एनिमल्स थे वो थोड़ा थोड़ा करके खत्म होते जा रहे थे, क्योंकि जो बाघ था यहाँ पे वो उन्हें मार के खा रहा था। और एट द सेम टाइम बाघ भी बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसको और बाकी सारे जो एनिमल्स थे जंगल में जिसका वो शिकार कर सकता था, क्योंकि वहां पानी की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी और पानी थोड़ा गंदा था, उसके कारण दूसरे एनिमल्स चले गए थे और उसे अपना जो फूड की चेन होती है वो पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। तो दोनों ही एक दूसरे से परेशान है। कौन जीतता है, कहानी का अंत क्या होगा, ये हम अगले हफ्ते देखेंगे। तो अभी हमारे पास 2-4 मिनट का समय है,
अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अपने आप को अनम्यूट करके कुछ बोलें या कुछ हमें बताएं, तो आप मोस्ट वेलकम है, एल्स आप मैसेज भी कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा? कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है, आज बहुत सारे नए बच्चे हैं, तो मैं अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे लिख देती हूँ। आप लोग प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप चाहो तो आप लिख भी दीजिए। मेरी ईमेल आईडी है mk@learningforward.org.in। मैंने मैसेज में लिख दिया है। मेरे ख्याल से कुछ टाइपिंग में एरर हुआ है, मैं दोबारा से लिख रही हूँ। तो मेरे ईमेल आईडी को आप नोट कर लीजिए। आज आपने क्या समझा, क्या जाना, आपको कौन सी कहानी पसंद आई, और आप आगे किस तरीके से चाहते हैं कि माई गुड स्कूल आगे बढ़े, और किस तरीके से आप अपने दिल में आए ख्यालों को हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब ये हुआ कि जो आप मिरर में देखते हैं, जिस तरीके से देखते हैं, वैसे ही आपकी सोच आपको क्या बता रही है। आपकी सोच का मिरर, शीशा। तो जैसे शीशे में हम अपने अक्स को देखते हैं, अपनी रिफ्लेक्शन देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, वैसे ही आपकी सोच की भी एक रिफ्लेक्शन होती है। तो आप अपनी सोच को हमारे साथ साझा करिए। आप हमें बताइए कि आपने आज क्या सीखा, क्या सेंटर आइडिया था, ये आज के आने का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, और कहानी आपको कौन सी अच्छी लगी। उस तरीके से आप मुझे लिख करके मेरे ईमेल पे देंगे, और या तो आप डायरेक्टली भी मुझे लिख सकते हैं, या फिर आपके स्कूल में कोई कोऑर्डिनेटर होगा जो हमारे ग्रुप के साथ, माई गुड स्कूल के ग्रुप के साथ साथ में होगा, तो आप उनको भी भेज सकते हैं और वो मुझे भेज देंगे। तो जो भी कहानियां आप मुझे लिख के भेजेंगे, आप ड्राइंग भी कर सकते हैं, आप एक वीडियो भी बना सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे करिए, और इस तरीके से हम उसको पब्लिश करेंगे अगले हफ्ते। जिन भी बच्चों की कहानियां पब्लिश होती हैं, उन्हें हम एक मौका देते हैं उन कहानियों को पढ़ने के लिए, अपनी रिफ्लेक्शंस को पढ़ने के लिए। तो आपको अगले हफ्ते मौका मिलेगा कि आप खुद यहाँ पे रीडिंग करें हमारे साथ। उसके साथ जुगजीव सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं जी, इट वाज गुड। बहुत नए बच्चे आए आज, और थोड़ा मतलब चैट का बहुत इस्तेमाल हुआ, तो पर कोई बात नहीं, अगले हफ्ते होपफुली सेटल डाउन हो जाएगा। तो सी यू ऑल नेक्स्ट संडे। हाँ जी, सी यू ऑल नेक्स्ट संडे। कुछ आप लोग को डाउट है, कुछ है, तो आप लोग प्लीज बताइए, और उस हिसाब से हम आगे कहानी को बढ़ाते हैं। सो मेरा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, mk@learningforward.org.in। ईमेल पे आप बताइए। फॉर दिस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीक। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।